and carry that baggage throughout the preparation and the making of the film? Hi, Nawaz. Thank you so much for the question. See, end of the day, no matter what language, no matter what strata of society you belong to, it's end of the day human emotion. Anyone who watches a film, I think the most remembered films are the ones where you remember characters. You know, they are driven by characters. You know, the biggest dialogues that you remember, चाहे वो गब्बर हो या चाहे वो आनंद हो, चाहे वो गीत हो. You know, it's any character in cinema, you remember characters. And I think that's one of the biggest strengths of Madhur Bhandarkar, because his heroes are the characters and he drives with them. So I think it was all there on paper, the script, the character was already there. As an actor, it's a privilege because you get to live so many lives in one lifetime. So of course, it's my responsibility to represent an entire community with to the best ability that I can. That does not mean that I would demean them through their secrets or what they have told me. That should not leak on the screen, but to the truest sense of who they are. Mostly the innocence, you know, like Mehru is an extremely innocent, bindas person. She has that will to survive. She has that survival spirit, and that's what I wanted to bring across. Of course, you pick on body language, you know, how you sit. I mean, she would never sit like this. You know, she would be more uninhibited, you know, when she would sit on the floor, her hand on the hip, or, you know, certain lingo. So things like that, that anyone who would watch it would be like, जब मैं पहली बार अपने मेरा मेरा 6 साल का नेफ्यू है, मैं पहली बार उससे मिली और मैं फूट फूट के रोने लगी. It was just so weird because I had never felt, how it is to not be able to meet somebody you love. किसी को छूना, किसी को हाय बोलना सुबह सुबह, किसी को देखना रोज सुबह, मतलब जब आपके घर आपके रूम में चाय आती है, आपको कोई कुछ भी पूछ लेता है, गुड मॉर्निंग भी बोल देता है. ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं. और इट वॉज माई बर्थडे द डे आफ्टर आई गॉट आउट ऑफ क्वारंटीन, एंड मेरी मम्मी ने मुझसे कुछ कह दिया और मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाई हूँ. मेरा झगड़ा हुआ है घर पे, मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई हूँ, मैं फूट फूट के रोई हूँ. एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी. आई लिटरली ब्लैक्ड आउट. एंड और जब उसके बाद फिर मैंने मॉम डैड की तरफ देखा, मैंने कहा आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू, आई एम रियली सॉरी, आई हैव नो आइडिया व्हाट हैपेंड टू मी. सो आई रियलाइज आई हैड एंग्जाइटी विद इन मी, और वो इतनी बढ़ गई थी कोविड के दौरान और उस आइसोलेशन के दौरान. सो आई कैन इमेजिन वॉट पीपल हु वर लिविंग अलोन फेल्ट जब वो लोग आइसोलेटेड लाइफ जी रहे थे, जब उनके लिए मतलब सिर्फ 2 लोग देखना भी बहुत बड़ी बात थी, या एक बंदा कोई सड़क पे दिख भी जाए तो बहुत बड़ी बात थी. सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन, just like mental health, anxiety, loneliness, depression, these are very important conversations in today's times. तो आप इसको ignore नहीं कर सकते इन conversations को. And I think that has been very beautifully depicted in Moon's story, with Satvik's character playing her next door neighbor, जो उसकी companionship का एक बहुत बड़ा हिस्सा है. So I think it's incredible what he's managed to do. may I add to that? I don't think you can compare problems. I don't think just because somebody is a commercial sex worker, or somebody is a commercial pilot, or somebody is a housewife, or a 5-year-old child who's doing e-school and not able to go out and play in the playground. I don't think success, happiness, or problems can be compared. And that's the whole idea of 4 completely different stories from different backgrounds. So, just to add. Hi, firstly congratulations to everyone. The trailer looks amazing and can't wait to see the film. My question goes out to Sai. Firstly, it has always been a pleasure to watch you on screen, and you had a charm to it every time you come on it. So firstly, thank you for coming back again to our screens and mesmerizing us. My question goes out during the lockdown, we all read stories about through the digital screens and through newspapers about everything that was happening around us. We empathized with the other people who had different problems than us. But when you get to live the life of a person from a different strata, even through the big screen, even through this medium of a screen, how did that kind of change your perspective towards the humanity in general, and how did it change you as a person? Thank you for being here and thank you for your question. Like I said earlier, after lockdown, I think we all have changed. Something in us, all of us has changed. We are more grateful, we are kinder,
That's what I believe. At least I am. And after playing this particular character, I realized how privileged I am. I'm more thankful today. I'm more grateful today, and it was my pleasure, or it was my honor to sort of understand and portray the character of a migrant worker and their problems. Some problems I could not even relate to. They were so, क्या बताऊँ, उनके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होता है. ऐसा भी होता है वाली चीज़ें, realizations बहुत सारी थी during the portrayal of this particular character. So to sum it up, I would just want to say that I am 200% more grateful for everything that I have, for the air that I breathe, for the food that I eat, for everything. Madhu? Hello. Mr. Kalram. Hi, this is Harshita. Here. Yeah. This side. Stage right. Hi. I got one question for you. Like, आपने OTT में बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, तो क्या मतलब आपका सक्सेस मंत्रा क्या है कि OTT में क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा, या how do you filter the story or maybe a script? Thanks, Harshita. I think it's a very good question. OTT has expanded the way Indians used to watch content. I think all of us agree. The kind of stories that we as a platform have been able to bring forward, which were not part of mainstream cinema. So what we are doing right now is looking at stories which will connect with the audience. So we're realizing real, relatable, like this one. Thrillers, action, some of the layered stories. The characters that you see in some of our stories are much more layered, maybe at times dark, maybe at times complex, which were not a part of the mainstream cinema. And Indians have kind of discovered those characters. The art of content making, movie making has evolved. So as a Z5, we are completely focused on bringing good quality content. I think what has happened is there's a huge quantity of content available in the market right now, but we do apply our filters, which are driven by consumer demand, by data analytics, and obviously our own instinct. And we hope to kind of keep giving you the right kind of content as we go forward. Thank you so much. मधुर जी, आपसे पूछना था, मतलब स्टोरी हर बार बताते हैं आपकी हीरोइन होती है फिल्म की, तो ये हीरोइन को आप ढूंढने कहाँ जाती है, वो आपको कहाँ मिलती है? थैंक यू. नमस्कार. हाँ, नहीं, मेरे ख्याल से मेरे जो किरदार होते हैं, मैं हमेशा स्क्रिप्ट लिखता हूँ. स्क्रिप्ट होने के बाद ही मैं कास्टिंग करता हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे मुझे 3 टैलेंटेड एक्ट्रेसेस मिली, श्वेता, साई और आना. और मुझे लगा कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा थॉट, किरदार रखने के बाद राइटर्स के साथ हम लोग बैठे, देन उन्होंने चयन किया कि किस तरह, खास करके लॉकडाउन जस्ट खत्म होकर शुरू हो रहा, आई मीन से थिंग्स स्टार्टेड मूविंग, और उस वक्त पे मैंने फ़ोन किया. एंड मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन इन तीनों का रहा हूँ हमेशा, और जब मैंने फ़ोन किया एंड दे ऑल अग्रीड, मैंने एक नरेशन में दे ऑल अग्रीड टू डू द रोल. आई एम वेरी थैंकफुल टू देम एवरीबडी, इंक्लूडिंग प्रतीक जी. हाँ, प्रतीक के लिए तो मेरे थोड़े से टीम वाले थोड़े से हिचकिचाहट थे कि बोला, सर ये तो बहुत ही सोबो मुंबई का आदमी लगता है, इसको पेज 3 पार्ट 2 में बनाइए, अब इसको इसमें क्यों डालते हो, माइग्रेंट वर्कर में. तो मैंने नहीं ये मुझे नज़र आता, बोलता हमको तो नज़र नहीं आता. और खास करके जब ये आया ऑफिस में, तो ये मैंने सिर्फ पूरे बाल ब्लू किए थे, अजीब तरह के गॉगल्स पहन के आया था, और टैटू पूरे बदन पे. तो बोला सर मैडमैक्स बनाइए आप. हाँ, तो लेकिन मुझे कहीं ना कहीं कन्विक्शन था कि ही इज वेरी गुड इन द फिल्म, एंड आई थिंक प्रतीक हैज always been very underrated, and I think it's time for ये ड्यू है तुम्हारा, और this movie will definitely be a game changer for him. जिस तरह का उसने किरदार निभाया है, और बॉडी लैंग्वेज जो उसने कैरेक्टर पकड़ी है, जो मैं खास करके माइग्रेंट वर्कर से इनको मिलाया, and he got it very rightly, the kind of thing. Everybody, including साई, आहाना को एरोस्टिस का मैंने एक रेफरेंस दिया, पायलट का रेफरेंस दिया, and Shweta ke saath we went to Kamati Pura, we interacted with a lot of sex worker over there. So
एवरीबडी जो है वो अपना किरदार बहुत ही अच्छी तरह निभाया है। और जो प्रकाश बेलवाड़ी सर जो आए नहीं यहाँ पे आज, उन्होंने भी जो किरदार निभाया है, जो साउथ इंडियन कैरेक्टर है, जो बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस, मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ उनका। और बेनोट को अप्रोच किया मैंने, सर ये रोल है, एंड ही सेड मधुर 100% आई आल्सो वांट टू वर्क विद यू, एंड वो आए। एंड केवल हमने 26 डेज में हमने इस पिक्चर को ख़त्म किया, 1 गो में ख़त्म किया। एंड फिल्म बहुत ही एक अच्छी, कैमरामैन ने हमारे कीकू DOP बहुत अच्छा काम किया, रोहित कुलकर्णी म्यूजिक डायरेक्टर ने बहुत अच्छा इसमें म्यूजिक दिया है। एवरीबडी, द होल टीम हैज डन अ फैब जॉब। एंड अगेन प्रणब जैन, जयंतिला गाड़ा जी और जी, थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन such kind of subject and such kind of things which will definitely go across the globe. My question is for Pradeep. Hi Pradeep, over here. Oh, at your right. Okay. Firstly, as Madhu sir mentioned, the type of persona you have is very different from what you're portraying on screen, and that's highly commendable. Like, I would like to ask you, how was it like, stepping into the shoes of a migrant worker? Like, we all have seen that in the media, but we never saw them like, in person. So what was that for you? Thank you for your question. It was a very special process for me to get into the skin of this character, to meet the migrant workers that I met. So made me meet some migrant workers, and उनको मिलके मैं बहुत ही कीन ऑब्जर्वर रहा। जब उनसे बातें कर रहा था, उनकी उठने बैठने का तरीका मैंने बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया। उनकी हार्डशिप्स थोड़े बहुत पूछे मैंने, ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछना था उनको नाराज़ नहीं करना था मुझे, तो बहुत जेनेरिक सवाल पूछे मैंने उनसे। लेकिन काफ़ी बातें हुई और कैसे एक दूसरे से बातें कैसे करते हैं, हंसते कैसे बच्चों से कैसे बात करते हैं वगैरह वगैरह, just daily mundane life कैसे जीते हैं। So that was one aspect of getting into the character. Another one was as I mentioned earlier, sir gave me some reference films to watch. A few of them were my mother's, a few of them were very hard-hitting films with hard-hitting characters, and each character had a struggle and a different struggle, which was important for me to watch and understand and observe, so I could, kind of be inspired for my own character that I had to play as Madhav. It's been a privilege and it's an honor to play a character like this. I think मैं सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे ये किरदार ऑफर किया। I think if I in छोटे से I'm happy that I could contribute in whatever small way in telling the story of this migrant worker, because I think it is important for us to know in detail what they went through, and so I would like to dedicate this character to all the migrant workers and the angst they went through, the struggles they went through. Yes. Hi. Madhu ji, मेरा सवाल। The last question, sorry. Hi, this is विशाल अम्बानी here. सर, जब भी लॉकडाउन की जिक्र होता है और मुंबई में स्पेशली लॉकडाउन का जब जिक्र होता है, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में एक नाम काफ़ी कॉमन था सर, सोनू सूद सर का मैं बात कर रहा हूँ सर आपको लगा कि उनकी जो कहानी है, इतने लोगों की मदद उन्होंने की, वो कहानी ये कहानी में आनी चाहिए, या फिर ये सारे कास्ट में सर भी होने चाहिए? कभी ऐसा फीलिंग आई सर आपको?
देखिए ऐसा है ना कि जब हमने इसका रिसर्च किया राइटरों के साथ बैठ के, तो हमारे बहुत से कैरेक्टर्स थे। मैं सच्ची बोलूँ तो कुछ 12 ट्रैक्स थे हमारे पास, 12। अब 12 ट्रैक्स को एक फिल्म में हम डाल नहीं सकते, टेक्निकली तो होगा नहीं। उस पिक्चर को हम लोग को एक कॉम्पैक्ट फिल्म था, एक बजटेड फिल्म था, तो हम लोग ने कोशिश की इसको उतना रखने के लिए। जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, सब लोग ने कंट्रीब्यूशन किया। अगर सोनू सिंह की बात कर रहे हो या और लोगों ने भी, जिन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया, बहुत अच्छी तरीके से किया है। लेकिन ये बात सही है, मैं आई नो सर्टन पीपल, जो NGOs थे, कुछ लोग थे जिन्होंने बहुत मदद की पहले लॉकडाउन में, जो फिल्म स्टार्स नहीं है, जो मीडिया में नहीं है। मुझे लगा उनकी भी स्टोरी बोलनी चाहिए मुझे। लेकिन जब हम फिल्म बनाते तो हम लोग को देखना पड़ता है कि हम लोग किस तरह की स्टोरी चुने और किस तरह का ये होना चाहिए। और फ्रंटलाइन वर्कर का भी जो मैं बात करूँगा, उनकी भी स्टोरीज थी मेरे पास, लेकिन इतना हमारे पास समय नहीं था। जो हम लोग ओवरऑल हम लोगों ने कलेक्टिव डिसीजन लिया, मैं मेरे राइटर्स ने बैठ के, कि नहीं भाई हम लोग को ये 4 स्टोरी बोलनी है। बोलने के लिए तो मैं बोलता ना, इसके लिए 3-4 सीजन कम पड़ जाएगा, क्योंकि इतना मटीरियल है और ग्लोबली हुआ है। ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र में हुआ है या हिंदुस्तान में हुआ है, ये पूरा वर्ल्ड में हुआ है। लेकिन हम लोगों ने कोशिश की कि जितना सटीक अपने 4 स्टोरी है उसी पे कॉन्सेंट्रेशन किया। और जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इस पेंडेमिक में, उनका डेफिनेटली मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उनका बहुत बड़ा योगदान है। जिन्होंने भी अपने अपने क्षेत्र में किया, उनका बहुत बड़ा योगदान है पेंडेमिक में लोगों की मदद की। Thank you, sir. Thank you everyone. I definitely have a question. तेरे बिना कंप्लीट ही नहीं The late comer. Congratulations. आपने बैक टू बैक फ्यू मंथ्स में आपकी बबली बाउंसर वो आपने की, फिर इसके बाद इंडिया लॉकडाउन, इट्स क्वाइट फास्ट। तो क्या बबली बाउंसर वाज ऑलरेडी आपके दिमाग में था या ड्यूरिंग लॉकडाउन उन्हें आपने की थी? और बैक टू बैक इट्स क्वाइट फास्ट कैन से। यार पहले तो मेरे को 3-4 साल फिल्म नहीं बनाई, तो बोला मधुर जी आप फिल्म क्यों नहीं बना रहे? अच्छी बात, 2 महीने में 2 पिक्चर आ रही हो तो तुम बोल रहे हो कि वी आर हैप्पी। मैं हैप्पी ना? खुश हूँ यार, मैंने चाहता हूँ अभी और 2 महीने के बाद और एक मतलब कुछ वो ज्यादा हो जाएगा। नहीं मैं बता रहा हूँ, इसलिए आई जस्ट लॉन्ग इट ऑन इट। देखिए ऐसा है कि ये पिक्चर हमने शुरू की 2021 में, हमने राइटिंग की इसको 2020 में, लेकिन लॉकडाउन था। लॉकडाउन में जैसे हमने कहा, लॉकडाउन में हमने पिक्चर लिखी, लेकिन 2021 में हम लोग को एक विंडो जो शुरू हो गया था, लाइक बेबी स्टेप चालू हो गए थे, लोगों बाहर जाना शुरू हो गए थे। लेकिन जो बबल में हम लोग शूट करते थे कि सबका RTP अपना होता था, कोविड अपना टेस्ट होता था, उसके बाद ही हम लोग वो शूटिंग करते थे। तो लिमिटेड बजट था और एक जो था कम जगह हमको शूट करना था, तो वो फरवरी मार्च में हमने शूटिंग की 2021 में। उसके बाद सडनली सेकेंड लॉकडाउन आ गया, तो सेकेंड लॉकडाउन में तो पूरी पिक्चर रेडी हो गई थी, लेकिन मैंने एडिट पे हाथ नहीं किया। 6-7 महीने ऐसे ही चले गए हमारे, कुछ नहीं हो सकता, सब ऑफिस बंद, सब जो भयंकर था। पहले लॉकडाउन से दूसरा लॉकडाउन बहुत ही भयंकर था, तो कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे बैठे रहे 5-6 महीने तक हो ना। तो बबली बाउंसर का चालू हो गया। बबली बाउंसर बाय द वे पहली स्क्रिप्ट लिखी थी, इंडिया लॉकडाउन से पहले स्क्रिप्ट रेडी थी हमारे पास, वो चालू हो गई। तो उन्होंने अप्रोच किया, मुझे कहा कि लेट स्टार्ट ये। उसके जब उसका प्रेप चालू किया मैंने बबली बाउंसर का, तभी जाके मैंने पिक्चर को एडिट किया अपना इंडिया लॉकडाउन का। उसके बाद सेंसर गए, सेंसर के अंदर उसको हम लोग ने सर्टिफिकेट लिया। सर्टिफिकेट में श्वेता के ट्रैक पे खास करके थोड़ा सा इशू था, तो हमने फिर रिवाइजिंग में किया, तो उसमें टाइम लग गया। और उसके बाद हम रिलीज करना चाहते थे, फिर जयंती भाई, मैं, जी, हम लोग सब बैठे किस तरह से इसको। तो जी का भी ऐसा था कि दे नीडेड अ प्रॉपर विंडो रिलीज करने के लिए हमको देखना पड़ता था, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास लाइनअप बहुत थे पिक्चरों के, और उससे पहले बबली बाउंसर का अनाउंसमेंट हो चुका था। तो बस यही है, तो 2 महीने में दोनों पिक्चर आई है, 2 कॉन्ट्रास्टिंग फिल्म है। बबली बाउंसर आपने देखी, लोगों ने पसंद किया, लोगों ने इतना सराहा पिक्चर। और इंडिया लॉकडाउन बहुत ही अलग फिल्म है, तो 2 अलग फिल्म है। या भारती जी प्लीज। I think it's fair. भारती जी लास्ट, भारती जी। I don't need a mic. Yeah. Madhur, I want to ask you, all your heroines invariably to get the national award. Out of your 3 heroines and Pratik and Prakash. मैं तीनों की बिहाफ पे ले लेता हूँ, मैं तीनों की बिहाफ पे ले लूँगा। नहीं, I think everybody has done a fab job. I'm very happy. Sai Tamhankar, Aahana and Shweta, they have done absolutely brilliant job. And Pratik Papar, just like I said, being a big fan of Smita ji, and I gave him references of his mother's film only, Chakra and Pain Pyar Aur Paap, the 2 movies which really where she played in Pain Pyar Aur Paap, she played a rag picker.
तो आई टोल्ड हिम कि इस तरह का किरदार है यू हैव, एंड शी इज डन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, फ्लॉलेसली। ऑब्वियसली यू मस्ट हैव सीन, पता नहीं बहुत लोगों ने देखी नहीं होगी पिक्चर, बट ही हैज डन, आई थिंक आई एम टेलिंग यू रियली, व्हेन यू सी प्रतीक्स कैरेक्टर इन द फिल्म, यू विल, पब्लिक जो है हर कोई स्मिता जी को याद करेगा। I think I will sum up with this. Thank you so much. I definitely want to end this with one question for you, since you're on stage with us and you worked with Sir. आपके लिए high point क्या था प्रणव to be a part of this beautiful storytelling? Anything that comes to your mind जो आपकी एक memory है? Please take the mic. It's right next to you. Thank you. I think every part of the way Madhur sir makes the movie is a memory. Like, when I was working with him, when I was assisting sir, I learned so many things that I never knew from behind the camera. He showed me a different world. When he took me on board as a producer, he showed me another side of the world. This is, ठीक है, कैमरे के पीछे आप रहते हो, एक एज असिस्टेंट आप रहते हो, फिर जब एज ए प्रोड्यूसर आते हो, you get into such small integrities, and the way sir taught me all those. That was a memory and a memorable experience for me. And obviously working with such good cast, and everyone has done justice to each character. Like no one, I can't think of anyone else ki हाँ Shweta character इसकी जगह कोई और करता शायद से better than no. I think Shweta has played it the best. I remember Shweta from Makdi. I still remember. I went to sir. I was like, sir, that actor. Oh my God! I have grown up looking at her. Literally, Pratik. I have seen his father. उन्होंने प्रतीक को भी तो ग्रो किया है, प्रतीक की पिक्चर देखी, राज्य की पिक्चर देखी होगी। Oh, I was going to say his father. Sir, grown up watching Raj Babbar ji's movie, not. I was growing up while Pranav. I think we all believe that being a part of Madhur Bhandarkar's world is like literally saying welcome to the real world, but welcome to one of your best works ever. Please let's clap for this fabulous star and India Lockdown Steve. May I please request all of you, and thank you members of media for being here, to step outside. There's a wonderful setup. एक फोटो यहाँ पे हो जाए। Now solo. सही सही एक चाहिए ना पहले भाई सही सही अरे सोलो खत्म करिए। और बोले इसको लेने का नहीं। काही वेळ इकडे समोर इथे इकडे इकडे बस भाई भाई थैंक यू थैंक यू सेंटर थैंक यू आना जी थैंक यू सर आना जी आना यहाँ पर बात है थैंक यू Thank you. Sorry?
Thank you.